ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। ऑस्कर की ये कैटेगरी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि बचपन से ही मुझे फैंटेसी और साइंस फिक्शन फिल्मों का बहुत शौक रहा है। यकीनन हर साल हॉलीवुड में इस कैटेगरी का मुकाबला बहुत सख्त होता है, मगर अवार्ड एक ही फिल्म को मिलता है। आज हम कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र करेंगे जिनके वीएफएक्स निहायत शानदार थे, मगर वो अवार्ड से महरूम रहे। 2008 इस साल बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन को दिया गया। And they can show how powerful a man can be when he ups his daily dose of iron. Now they're all great, but for outstanding visual effects, the nominees are The Curious Case of Benjamin Button, Eric Barba, Steve Krieg, Burt Dalton, and Craig Barba. The Dark Knight, Nick Davis, Chris Corbell, Tim Weber, and Paul Franklin. Iron Man, John Nelson, Ben Snow, Dan Satik, and Shane Mayhem. and the Academy Award goes to The Curious Case of Benjamin Button, Eric Barba, Steve Krieg, Burt Dalton, and Craig Barba. जो यकीनन एक शानदार फिल्म थी, मगर उसी साल दो और बेहतरीन सुपर हीरो फिल्में रिलीज हुईं। एक थी द डार्क नाइट। ये उन चंद सुपर हीरो फिल्मों में से है जो साइंस फिक्शन से बढ़कर इंसानी जज्बात, खुसूसन अच्छाई बुराई की जंग पर बहस करती हैं। साथ ही फिल्म का वीएफएक्स भी शानदार था। कई सीन्स इतने हकीकत के इतने करीब थे कि अब फिक्शन और रियलिटी के दरमियान फर्क भूल जाते हैं। दूसरी फिल्म थी आयरन मैन, जो एमसीयू की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के वीएफएक्स भी बेहतरीन थे, खुसूसन आयरन मैन के ट्रांसफॉर्मेशन वाले मनाजिर बहुत उम्दा थे। अगर इन दोनों फिल्मों में से किसी को अवार्ड मिलता तो भी इंसाफ होता। 2011 इस साल फिल्म ह्यूगो को ये अवार्ड मिला। फिल्म अच्छी थी और वीएफएक्स भी, मगर मेरे हिसाब से इतने बेहतरीन नहीं कि उसे ऑस्कर मिलता। Here are the nominees for achievement in visual effects. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, Kim Burke, David Vickery, Greg Butler, and John Richardson. Hugo, Rob Legato, Joss Williams, Ben Grossman, and Alex Henning. Real Steel, Eric Nash, John Rosengrant, Dan Taylor, and Swen Gilbert. Rise of the Planet of the Apes. Jolliterry, Dan Lemon, Art Christopher White, and Daniel Barrett. Transformers, Dark of the Moon, Scott Farrar, Scott Benza, Matthew Butler, and John Pridgen. And the Oscar goes to Hugo. क्योंकि इसी साल फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 भी रिलीज हुई। इस पूरी सीरीज के वीएफएक्स बेहतरीन रहे और इस साल शायद इस फिल्म के मुकाबले में कोई दूसरी फिल्म ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी। 2015 इस साल ये अवार्ड फिल्म एक्स माकिना को मिला, जो नाइंसाफी नहीं थी। अलबत्ता मुकाबला बहुत सख्त था। Here are the nominees for this year's achievements in visual effects. Ex Machina, Andrew Whitehurst, Paul Norris, Mark Ardington, and Sarah Bennett. The Martian, Richard Stammers, Anders Langlands, Chris Lawrence, and Stephen Warner. Mad Max Fury Road, Andrew Jackson, Tom Wood, Dan Oliver, and Andy Williams. And the Oscar goes to Ex Machina. क्योंकि इसी साल 2 और बेहतरीन वीएफएक्स वाली फिल्में रिलीज हुईं। एक थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड। इस फिल्म को तारीख की बेहतरीन एक्शन फिल्मों में से एक तस्वुर किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। ये इन चंद फिल्मों में से है जिनमें ओरिजिनल लोकेशंस का इस्तेमाल न होने के बराबर है। तकरीबन तमाम फिल्म ही वीएफएक्स लोकेशन पे बनी हुई है। दूसरी फिल्म थी द मार्शन। ये एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल ड्रामा फिल्म थी, जिसकी आधे से ज्यादा मनाजिर मरीख पर दिखाए गए हैं, इसलिए ईएफएक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है और तमाम ही शानदार है। अगर इन दोनों में से किसी को अवार्ड मिलता तो भी इंसाफ होता। 2016 इस साल ये अवार्ड फिल्म जंगल बुक को मिला, जो मुकम्मल इंसाफ होता। अगर
इसी साल डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज न हुई होती तो Here are the nominees for achievement in visual effects. Deepwater Horizon, Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington, and Burt Dalton. Doctor Strange, Stefan Saradi, Richard Bluff, Vincent Sorelli, and Paul Corbu. The Jungle Book, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, and Dan Lemon. Cooper and the Two Strings, Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean, and Brad Schiff. Rogue One, A Star Wars Story, John Knoll, Moen Leo, Hal Hickel, and Neil Corbu. And the Oscar goes to The Jungle Book, Robert Legato, Adam Valdez. इस फिल्म को MCU का टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अब तक की तमाम फिल्में महज साइंस फिक्शन सुपर हीरो होती थीं, मगर यह फिल्म फैंटेसी, डार्क फैंटेसी और साइंस फिक्शन का बेहतरीन इम्तिजाज था। फिल्म के VFX नहायत शानदार थे। अगर मैं MCU की लिस्ट इसके VFX को लेकर बनूं तो ये फिल्म टॉप 3 में तो लाजमी होगी। अगर इस फिल्म को अवार्ड मिलता तो बेहतर इंसाफ होता। 2017 इस साल ये अवार्ड ब्लेड रनर 2049 को मिला, जो कि बिल्कुल डिजर्विंग था। Here are the nominees for achievement in visual effects. Blade Runner, 2049. John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, and Richard R. Hoover. Guardians of the Galaxy Volume 2, Christopher Townsend. Guy Williams, Jonathan Faulkner, and Dan Sudeck. Kong, Skull Island, Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Fanza, and Mike Meinartis. Star Wars The Last Jedi, Ben Morris, Mike Mulholland, Neil Scanlon, and Chris Corbould. War for the Planet of the Apes, Joe Latery, Daniel Barrett, Dan Lemon, and Joel West. And the Oscar goes to Blade Runner, 2049. अलबत्ता इसी साल साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड भी रिलीज हुई, जिसके VFX वर्ल्ड क्लास थे। कहानी एक ऐसे जजीरे की है जो दुनिया से बिल्कुल जुदा है। यहाँ ऐसी देवकामत मखलूकात रहती हैं जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखे। ऐसी मकड़ियाँ जिनकी टांगें दरख्तों से ऊंची हैं, ऐसे भैंसे जो चट्टानों जैसे जसामत रखते हैं, और इस जजीरे का राजा है 300 फीट ऊंचा एक किंग कॉन्ग। इन तमाम जानदारों समेत बाकी मनाजिर VFX के जरिए तख्लीक किए गए और इतने हकीकत से नजदीक के देखने वाला दंग रह जाता है। इस साल इस फिल्म को ये अवार्ड मिलता तो भी बराबर का इंसाफ होता। वीडियो का ये नया सिलसिला कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।